I'm starting from now. Welcome students in next lecture of Industrial Engineering and Ergonomics. Today we'll go through what is exactly work factor system, MTM and MOST. So these are the methods of again evaluation of the same what we have studied in the previous lecture. We will start up with PMTS, which we have studied in previous lecture. We'll see a brief of it and then we'll start with work factor system, MTM and MOST. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. You say we have discussed about PMTS, predetermined motion time study. Now, what was that? Uh, if we really need to, judge or access any activity, we have some standards to compare the desired level of work. Even we need standards or datums as we study in previous lecture that uh, if we wait if we compare two people for their weight, so one has to be at datum, or we have taken an example of scale also. At a scale or anything, any instrument is have a reference point that is zero. We were discussing it, and reference we can make any figure as a reference, and that will be the standard for every comparison. So that's what we have discussed, that we need a reference and how we have reference, how we take reference. The very first study in which we have got the data, and that is taken in the sheet of PMTS, and that for future reference as a standard data. uh, if किसी उसी तरह के अगर सिमिलर वर्क एलिमेंट होते हैं या वर्क पार्ट होते हैं तो उनको कंपेयर करने में हमको आसानी होती है. सो दिस वे वी हैव सीन व्हाट इज PMTS. तो इस करंट कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था वर्क और ऑपरेशन जो है नंबर ऑफ वर्क एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक रिलेशन या स्टैंडर्ड डेटा को हम लोग जनरेट करते हैं. देन वी हैव सीन व्हाट इज उसके हमने देखे थे कि जस्ट फिर हमने वी हैव सीन दैट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग PMTS. So there were 5 methods, and as we discussed that we have only 2 methods to study as they are in our syllabus directly, the work factor system and the MTM. And another thing, MOST, that is also a part of PMTS or similar to PMTS. We will study that at the later or at the end of the lecture. So what was work factor system? We have discussed with an example that anything, any animal or any animal who is four-legged cannot be compared, or any fruit cannot be compared. आपस में नहीं किया जा सकता कंपेयर. एप्पल को ऑरेंज से नहीं किया जा सकता, या कोई भी लाल फल है तो उसको अपन कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हर फल की एक विशेषता है. सिमिलरली एनिमल में भी हमने देखा था कि एक हॉर्स और एक डंकी को हम कंपेयर नहीं कर सकते. वी कैन नॉट कंपेयर by assuming that both the animals are four-legged, but similarly we cannot measure all work with similar all kind of elements of work, बिकॉज एक टर्निंग जॉब को, एक अनलोडिंग जॉब को एक टर्निंग जॉब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. तो हर वर्क एलिमेंट की एक स्पेसिफिकेशन होती है और उस वर्क एलिमेंट को उसी वर्क एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ता है. सो to find out the efficiency, we have to take care of many of the parameters in that. And then we have taken an example of that two lecturers, one is teaching X subject and another is teaching Y subject. X is taking technical subject and Y is taking a management subject. And if somebody wants you to decide, or anyone to decide who is better, it's not an easy job, because
both the teachers both the teachers have different subjects in their hand, and these two fields are altogether different one. And also, the content, the content is also again a different. One is a technical subject, another is an administrative part of it. So these both are altogether different, so it's very difficult. But although, when you compare the teachers, so you have many things, common things to compare. We have discussed about it, that gesture hai, posture hai, style hai, language hai, mood है, क्वेरी हैंडलिंग है, स्टूडेंट्स को कैसे एंगेज करके रखना है, वो है. सो समटाइम्स इट हैपन्स, ये सारी चीजें हम डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हैं. बट मेंशनिंग कि एक टेक्निकल सब्जेक्ट ले रहा है और एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट ले रहा है, या अप्लाइड साइंस का सब्जेक्ट है, या फिर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, so these two are a different one. Even then, if somebody is teaching, like I'm taking now industrial engineering, and earlier I used to teach engineering drawing. Even comparing with these two subjects, and again a different one, because one subject is kind of a numerical type का subject हो गया, ED भी थोड़ा सा, और उसमें प्रैक्टिस चाहिए. इवन मैथ्स और ईडी को भी कंपेयर नहीं किया जा सकता. सो होने को दोनों टेक्निकल भी हैं, लेकिन इवन देन यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू सब्जेक्ट्स. एंड समटाइम्स देयर आर हिडन पैरामीटर्स एज वेल, जैसे हेल्थ कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, या इवन आई शुड से मेंटल कंडीशंस है, फैमिली कंडीशंस भी हैं किसी टीचर की, या जॉब प्रेशर कैसा है. दैट आल्सो डिपेंड्स. हर टीचर का डिलीवरेंस हर लेक्चर में आपको, इवन आप एक ही टीचर को उसी सब्जेक्ट के पहले, दूसरे, तीसरे लेक्चर्स को ऑब्जर्व करके अगर कंपेयर करो, तो उसी टीचर के उसी सब्जेक्ट में अलग अलग लेक्चर्स में आपको उसका डिलीवरी की स्ट्रेंथ अलग अलग दिखेगी. कई बार आपको दिखेगा टीचर लुक्स वेरी डल टुडे, कई बार आपको वही टीचर वही सब्जेक्ट पढ़ाता हुआ दिखेगा, ही इज टोटली top of the world today. Now he is delivering today like anything. He is having a good number of examples today with him or her. तो ये भी इवन कंपेयर किया जा सकता है, उसी के सब्जेक्ट को उसी की टीचिंग स्टाइल के साथ रोज डेली में भी आप कंपेयर कर सकते हो कि आज ही लुक्स वेरी डल, शायद कुछ टेंशन है, या घर की होगी, या ऑफिस की होगी, कुछ और हो गया होगा, तबीयत तो ठीक है उनकी, क्या हो गया. So there can be many conditions which are hidden, and variable parameters are there to impact someone's performance. In similar fashion, we have seen that student also, when teachers used to judge student for their performance, and some students are even good, but they are not at rankers position, but some students are at rankers position. Now this could be possible if somebody is having a good knowledge and concepts within him or her, but are not a part of rankers lobby. But sometimes it happens like a person, if he or she doesn't carry the basic concepts of even the subject, but he or she may carry the belongs to the lobby of, rather I should say, belongs to the lobby of rankers. It may be possible, डिपेंड करता है. जैसे आई यूज्ड टू से 10th में मुझे हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसमें रटना बहुत ज्यादा पड़ता था. लेकिन मेरे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, those were little weak in science, but very good in social studies like history, geography, economics and all. They were very good. What they used to do, they used to learn a lot. They used to learn means by hearting the things. रटते थे हाथ रख के कॉपी पे. और मेरे ख्याल से उस सब्जेक्ट में नंबर बनाने का तरीका भी वही है, तो वो मेरे नहीं बनते थे. तो sometimes person may not be that good in by hearting the things, so that is also a part. तो वो कई बार परसेंटेज, क्योंकि अपना यहाँ किसी भी बंदे का सक्सेस जो होता है वो परसेंटेज पे डिपेंड करता है. if a person is having 80% plus marks, then he may be shortlisted, he or she may be shortlisted first. But if a person is having 70-75 percentage, अगर कंपेयर करें तो ऑब्वियसली हम खुद भी कहेंगे कि
what figures reflect is different, but that may not be true. जो figure reflect कर रहा है that may not be true. उसके पीछे की story one should be able to observe and understand the things. So there are variable parameters we have discussed and accounted, for the performance of a student. कंसंट्रेशन लेवल उसका क्लास में कैसा रहा, घर में उसकी परिस्थिति कैसी है, घर में शायद नहीं पढ़ पा रहा है, उसको कहीं जॉब तो नहीं करनी पड़ रही, या एग्जाम देते समय उसका कंसंट्रेशन कैसा था, उसकी फैमिली कंडीशंस कैसी हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, मेंटल कंडीशंस कैसी हैं, किसी परेशानी से तो नहीं गुजर रहा, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर में अगेन वेरी, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा आया, इस कारण से बच्चा डिप्रेस तो नहीं हो गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे या मिसलीडिंग क्वेश्चंस थे, या बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं स्टूडेंट के भी कि वो एक्चुअली उसको जितने नंबर आने चाहिए थे उतने नहीं आए. Many of the times we even used to say, अरे आप तो इतने अच्छे स्टूडेंट हो, आपके मार्क्स इतने कम कैसे हो गए, पढ़ाई नहीं की लगता है इस बार. स्ट्रेट अवे वन में से यार क्या हुआ, पढ़ाई नहीं कर पाए या नहीं की. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस जिसके कारण ये चीज हो सकती है. So the degree varies. It depends upon a person, a subject, the conditions, circumstances, the environment. कई बार किसी किसी को ये एनवायरनमेंट भी खलता है कि मेरा ही कॉलेज सेंटर नहीं था, मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा. वो भी कंडीशंस हैं जो स्टूडेंट को वो करती हैं. those who are little bit जो इमोशनल हैं उनको ये चीजें अफेक्ट करती हैं. So but even then one should calculate all these standards and standard deviations on based on it. So we have seen this much in work factor system. Then we have taken another example. We have taken this example. Now what exactly when we talk about our mechanical engineering part, the industrial work, uh, so that is our actual work, or the work takes place on the shop floor. जो field में या shop floor में work होता है वो basically mechanical engineer का काम है. Let us discuss that now. There a lot of physical work happens or takes place. So when we perform our work, it is affected by some four kind of factors. First of all, the body members. So what are those members? The arm, बाजू है, forearm है, श्रिल है, मतलब फोआर्म को घुमाना है, पूरा श्रिल करना है. जैसे बॉलर्स वार्म अप के लिए उल्टा श्रिल करते हैं हैंड्स को. ट्रंक है आपका, जो नेक का बैक पोर्शन है which connects your brain and spinal cord, तो वो ट्रंक वाला पोर्शन है. देन फुट है, पैर के तलुए हैं. लेग पोर्शन है, फिंगर्स है, हैंड्स हैं, आई है, ईयर्स है. all these body parts has work in a synchronized manner, in a similar at a same point of time. And then a distance moved, how much operator has moved for anything, and how much material even has moved. It is calculated in centimeters or inches. Then comes the machine control. Like you must not have seen the machines. You just imagine yourself, you are sitting in a car, and all these controls are almost similar which a car driver carries. तो जब आप उस सीट पे बैठे हो तो समटाइम्स आपको ब्रेक भी लगाना है, आपको गियर भी चेंज करना है, आपको रेस भी देना है, आपको स्टीयर भी करना है, डायरेक्शंस चेंज करनी है, डायरेक्शन कंट्रोल्स हैं, आपको उसको स्टॉप करना है, आपको उसको अगेन पिकअप करना है, आपको उसको स्पीड अप करना है. एंड मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑलमोस्ट ये चीजें सेम है, लेकिन पंप्स हैं या और भी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सब देखनी है. प्रिकॉशनरी मेजर के लिए भी कार्स में सारी चीजें अवेलेबल हैं. अगर आप बेल्ट नहीं लगाते हो तो इट शोज ऑन योर फ्रंट स्क्रीन, आपको दिखता है जहाँ ओडोमीटर और स्पीडोमीटर रहते हैं वो आपको क्लियर दिखता है वहां पर कि आपने बेल्ट नहीं लगाई. अगर आप चाबी छोड़ते हो तो इट गिव्स यू अ सायरन दैट यू हैव लेफ्ट योर कीज इनसाइड द कार इटसेल्फ बिफोर द डोर लॉक्स. एंड अगर आपने हैंड ब्रेक लगाया हुआ तो वो आपको स्क्रीन पे दिखता है, अगर ऑयल नहीं है तो स्क्रीन पे दिखता है. So all these kinds of panel and controls are there in your car itself, even if you have not seen the machine panel how to operate that.
और दूसरी चीज जो वेट और रेजिस्टेंस है लोड्स के, लोड्स माना जो मशीन्स हैं उनमें एक तो ऑब्जेक्ट का लोड है जो कि जॉब जॉब है, जॉब पीस है उसका लोड है। अनदर थिंग इज कई बार काउंटर वेट होता है machines में to lift some component we need a counterweight as well ताकि वो इसे उससे उस मशीन की लोडिंग कैपेसिटी को हम जज भी कर सकते हैं। ठीक है, देन मूविंग अहेड, वर्क फैक्टर सिस्टम में कुछ वर्क एलिमेंट्स हैं, लेट अस सी दोज वर्क एलिमेंट्स। So these work elements are first is assembly। assembly हम जानते हैं दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को किसी तरह एंगेज करना और putting together or engaging together by means of nut and bolt, by means of sometimes another fasteners also। और वेल्डिंग भी कर सकते हैं, परमानेंट असेंबली करनी है तो परमानेंट उसको फिक्स करना है तो डिसअसेंबल करना, द रिवर्स ऑफ द सेम, separate the different parts but we have assembled earlier, तो वो भी रहता है। then transport है move and reach, एक प्योरली इधर मटेरियल हैंडलिंग और इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग। कई जगह इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत भी होती है तो एक मशीन पे कुछ समय रुकता है फिर दूसरी मशीन पे जाता है, वो भी पॉसिबल होता है। मटेरियल की मूवमेंट जो है either from raw material to first operation place or in between the semi finished component or between the finished one to FGS or inspection department। तो यहाँ से लेके पूरा मूवमेंट होता है मशीन का। देन प्री पोजिशन, नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली प्री पोजिशन? तो प्री पोजिशन में क्या होता है कि डेफिनेटली एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन जब हमने डिसाइड किया है तो ऑब्जेक्ट जिस पे हमको वर्क करना है या वर्क पीस जिस पे अपन को ऑपरेशंस करने हैं, दैट हैज टू बी देयर बिफोर स्टार्ट ऑफ द वर्क। तो दैट इज प्री पोजिशन, दैट इज लोडिंग ऑन ऑफ एन आर्टिकल एट द प्री डिफाइंड प्लेस एंड दैट शुड बी रेडी टू यूज, है ना। एंड नेक्स्ट इज ग्रास्प, इसको होल्ड भी कई जगह बोलते हैं। वी हैव सीन many of the elements of work or a part of work or operations में भी ये काउंट होता है तो उसको ग्रेस्प भी बोलते हैं हम लोग। then use manipulating or causing a tool to do its function, use of instruments, tools and handling equipments, so ये सारे उसी में आ जाते हैं। then mental process, initially before start of work definitely one has to plan something, how I'll proceed, what I'll do first, then next, this way, this manner we will proceed my work. And the release load, what is release load? Say suppose you are driving a car and you are in third gear and you are about to stop your car, so you will be third gear से second या first आओगे और neutral कर दोगे, so that moment you kept your car in neutral one, so you release the load on an object that is your car। so इस तरह की चीजें, एंगेजिंग डिसएंगेजिंग, एंगेजिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ये सारे एग्जांपल्स रिलीजिंग एन ऑब्जेक्ट के ही है। नाउ अब हम देखते हैं कि वर्क फैक्टर सिस्टम में बॉडी पार्ट्स का और सिंबल्स जो हैं वर्क फैक्टर का। सो बॉडी पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं ये सारे। दीज आर दी सिंबल्स फॉर द सेम। आर्म मूवमेंट के लिए ए, फिंगर्स के लिए एफ, हैंड के लिए एच, फोर्स आर्म स्विल, हवा में पूरे हाथ को घुमाना तो उसको एफ एस वर्ड यूज करते हैं। ट्रंक को टी आर, फुट को एफ टी, लेग को एल, head turn को HT। Now similarly for work factor they have some different symbols, that is weight और resistance को हम W लिखते हैं। हम लोग अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में W को लोड भी बोलते हैं, लोड वर्ड भी यूज होता है। then steering और डायरेक्शनल कंट्रोल, तो इट इज ऑलवेज S, स्टीयर करना, जैसे हमारी कार में भी होता है। प्रिकॉशन और केयर, प्रिकॉशन लेना, one has to check and even double check the things
before commencement of operation and even during the operation itself. So it happens, and if we say we have to change the direction, like simply I should say कि right में कार ब्रेकर के पास चल रही है, but I have to even move to left, और अगर left में चल रही है तो right में जाना है, तो this is simple example of changing the direction as well. And definite stop माने वो बटन जहाँ पे अपन इंस्टेंट स्टॉप हमको मिलेगा. एक होता है डेफिनेट स्टॉप, एक होता है इमरजेंसी स्टॉप. समटाइम्स डेफिनेट स्टॉप और इमरजेंसी स्टॉप सेम होते हैं, समटाइम्स नहीं होते. तो these were the tables for the same, and then we'll move to MTM. Now what is exactly MTM? Method time measurement. Method time measurement. Now it is basically, it presumes a powerful tool for work simplification purpose. और ये इसका प्रोसीजर क्या है? इट्स अ प्रोसीजर which analyze to distribute the manual operation or methods into basic motion, and assigns with a PMTS or predetermined motion time values, which we have already found out by comparing the similar nature of motion. Okay, so this is basically the idea behind MTM, and it was basically developed for motion picture studies. Earlier we have this, and we were using it on industrial workers or operators. So the time standards here are taken as TMU, that is time motion units, and this one TMU is 0.0006 minutes. And basically, without stopwatch, in terms of these TMU, we can do the analysis of method, and also can do the time measurement as well. Now moving ahead. Now these we have almost seen in previous this thing also. This method also has some fundamental motions. So 8 basic motions, that is reach, move, apply pressure, turn, grasp or hold, and position. Position माने उस जगह पे रखना जहाँ ऑपरेशन करना है. Disengage we know, release load we know. 2 eye motion, that is eye travel time. What is eye travel time? आई ट्रेवल टाइम माना जब मैंने चीज को सोचा और मेरी आंख ने उसको देखा. देन आई फोकस टाइम माने उस कंपोनेंट पे मेरी आंख ने जब फोकस किया कि वेयर एग्जैक्टली आई नीड टू वर्क, दैट इज आई फोकस टाइम. then we have 9 pedal and trunk motions with us. तो साइड अप स्टेप है, टर्न बॉडी है, कमर वाली टर्निंग ये बोल रहे हैं, वॉक है, बेंड है कुछ उठाने के लिए, स्टॉप है, और नील और वन लेग माने एक घुटने पे बैठना है, नील ऑन 2 लेग्स माने दोनों घुटने झुका के अगर काम कर रहे हैं, या कुछ फुट मूवमेंट है, फुट मोशन है, या प्रॉपर आप सिट करके वर्क कर रहे हैं. सो दीज आर द बेसिक मोशंस that will be considered here. What are these basic motions? These are that parts of small work. we know कि एक काम को हमको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनको स्टडी करना पड़ता है. सो ये वो छोटे टुकड़े हैं जो हर मेथड के साथ मेथड बनाने वाले ने डिस्कस किए हैं. तो ये हर मेथड के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन थोड़े थोड़े अलग भी हैं, जो कि उनकी यूनिकनेस को बढ़ाता है. देन वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ एमटीएम. एमटीएम का मेन पर्पस अगेन वही है, टाइम स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करना, देन इम्प्रूवमेंट करना, या तो जो मेथड ऑलरेडी प्रिवेल कर रहे हैं, मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर है ना एग्जिस्टिंग या प्रिवेलिंग मेथड्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करना, कॉस्टिंग की और एस्टिमेशन अच्छे से कर पाना, डेवलपमेंट ऑफ टूल डिजाइन. नाउ हाउ टूल डिजाइन हैपेंस, लाइक एक मशीन है उसमें एक ही टूल अगर टूल होल्डर में लग पा रहा है, तो ऐसी फेस प्लेट डिजाइन करना जिसमें एक से ज्यादा टूल अपन लगा पाए, सो वो हमारा काम बचाएगा, टाइम बचाएगा और कॉस्ट भी कम करेगा.
So this is basically a development of design, tool design, selection of effective equipment. There can be many equipment, बहुत सारे equipment होते हैं जो similar purpose के लिए बन हो सकते हैं. जैसे हैमर ही है तो बहुत तरह की हैमर है, और फॉर अ जनरल पर्सन और अ ले मैन सारी हथौड़ियाँ जो हैमरिंग का ही काम करती हैं, लेकिन उस केस में क्या इफेक्टिव होगा equipment, that selection is quite important. Development of effective method, there we have seen many methods with different time standards, and what should be the most effective one, we have to search it out in using this MTM method. And डेफिनेटली ये सारी चीजें होंगी तो प्लानिंग विल बी गुड एंड एडवांस्ड वन. और एडिंग प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्ट रिनोवेशन एज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. See, when you study the old products of yours and new product of competitor one, definitely you will be having a number of new ideas to accommodate in your product, to renovate your own product for the purpose of new product development. So these are again comes under MTM. And definitely if these many things, not many things happens in above points, you need to train your operator and supervisor as per the new method adopted in new time standard. They should be, बहुत ज़्यादा केयरफुल होने चाहिए इन चीज़ों के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस कि नया मेथड भी सीख लिया लेकिन बहुत सारी चीजें हम पुरानी पुरानी यूज कर रहे हैं क्योंकि वो हमको इजी लग रही हैं और हमको याद है, इससे मेथड की और टाइम स्टैंडर्ड की इफेक्टिवनेस खत्म होती है. So these people has to be trained very nicely, and they should be followed, whether they are following the same methods which they have exactly taught. तो वो सब देखना होता है. देन प्रोवाइड्स अ गुड बेसिस फॉर सेटलमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस इन वेजेस. और डेफिनेटली जब हम टाइम स्टडी करते हैं, हम कॉस्ट स्टडी करते हैं, तो जो वेजेस हैं ऑपरेटर्स के, डेफिनेटली उसको एक अच्छा सेटलमेंट मिलता है. दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ इंसेंटिव and basic wage system. This we will deeply study in unit 3 as well. Now moving to MOST, most. We have only 4 minutes left. We'll, by the time we'll complete this most as well. So uh, we'll continue with MOST. That is basically Maynard operation sequence technique. Maynard has given this operation sequence technique. One thing you must have observed, all these people who has devised their method, they have given their own names in it. So this way they have done. So Maynard operation sequence technique, this concept came in 1965 and formalized in 1975. It's an again another technique of work measurement. Here majority of work have been studied through the movement of objects. Now how many and how much object is moving, that give you the clear picture how many work has been done so far and what is the exactly status of the work. So if you like, I have to say that work is accomplished, then and only then you will see the movement of objects. So this is the basic in, philosophy of rather I could say MOST. I should say it's a system to measure the work by concentrating the movement of work or a job piece. तो इसमें जो सीक्वेंस मॉडल हैं वो कैसे करते थे, वो जनरल मूव सीक्वेंस जो है इट शोज द स्पेस मूवमेंट, माने एयर टू एयर. अगर ऑब्जेक्ट पिलर क्रेन से लाया जा रहा है, यू मस्ट हैव सीन पिलर क्रेन इन दी इंडस्ट्री, जो ओवरहेड पिलर क्रेन होती है जो कि सर के ऊपर से निकलती है. सर के ऊपर से जब जाती है तो वो एयर से एयर में ही ऑब्जेक्ट को मूव कराती है. एक जगह से उसने उठाया, दैट ऑब्जेक्ट इज लोडेड इन या loaded in that crane. The crane has moved from one place to another place, so that comes under general move sequence. And the controlled move sequence, it's like surface to surface movement of the object, like conveyor belts में होता है. कन्वेयर बेल्ट पे जब चीजें मूव करती हैं जो कन्वेयर बेल्ट से भी टच रहती हैं, एंड समटाइम्स
एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से भी आगे पीछे में भी टच रहता है, तो दैट इज कंट्रोल्ड मूव सीक्वेंस, एक दूसरे को धक्का लगा के चीजें आगे बढ़ती हैं. देन इज टूल यूज सीक्वेंस. द व्हाट इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ टूल, मतलब टूल्स का सीक्वेंस कैसे है. टूल्स का सीक्वेंस जो है, वेदर आई शुड से द मूवमेंट्स ऑफ टूल्स और द यूसेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ टूल्स. माने एक ऑपरेशन है तो वी नो पहला ये टूल यूज होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा. तो वन कैन से अच्छा ये चौथा वाला टूल यूज किया, इसमें तो टोटल 8 टूल है, इसका मतलब ऑलमोस्ट 50% वर्क हैज बीन डन. सो ऑन दैट बेसिस समवन may calculate the things. There the method says like this. And now here we have seen that MTS or PMTS work units have been measured. Time taken for basic motion time, बेसिक मोशंस. हमने देखा एमटीएम और पीएमटीएस जो हैं वो जो बेसिक मोशंस में जिसमें ब्रेक कर रहे थे उनकी टाइम स्टैंडर्ड से कैलकुलेशन कर रहे हैं. लेकिन जब हमने एमओएसटी देखा तो एमओएसटी में इट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट, जिसमें मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता था. तो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट हम कैसे कैसे देखे थे कि स्पेशल मूवमेंट है उसका, मतलब स्पेस में मूवमेंट है, हवा में, एयर टू एयर. दूसरा था सरफेस टू सरफेस, और तीसरा था जो सीक्वेंस ऑफ टूल यूज्ड और आई शुड से द मूवमेंट्स ऑफ टूल यूज्ड, वो हमको देखना था इसमें. ठीक है. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विद वर्क सैम्पलिंग. we'll continue with our work sampling and work sampling क्या है, क्यों की जाती है, और we'll move ahead with work